వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గౌరీ న్యామాని. నా ఛానల్ గౌరీ న్యామానికి స్వాగతం. హౌ టు స్పెండ్ మనీ ఈవెన్లీ అని నా ప్రీవియస్ ముందు వీడియోలోని ఒక పాయింట్ తప్పు చెప్పాను, అది కరెక్షన్ చేస్తున్నాను. వాడిన నూనె వాడచ్చు అని ఉత్తి విస్కాసిటీ ఒకటే మారుతుంది అనుకున్నాను. అంచేత అందులో బయోలాజికల్ ఇన్ఫెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమీ లేదు కాబట్టి అది వాడచ్చు, అందులో భయపడక్కర్లేదని నేను చాలా గట్టిగా చెప్పాను. కానీ మా తోడేలు గారి అబ్బాయి ఎంఎస్సి పిహెచ్డి ఇన్ కెమిస్ట్రీ, వారణాసి యూనివర్సిటీ, డాక్టర్ హోరగడ్డి సుందర్రావు తను చెప్పాడు ఏంటంటే హై టెంపరేచర్లో నూనె మాలిక్యులర్ బాండేజ్ మారిపోతుంది, వేచినప్పుడు వేగడానికి పెట్టిన హై టెంపరేచర్గా మాలిక్యులర్ బాండేజ్ మారిపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చిన బాండేజ్ అది హార్డ్ టు డైజెస్ట్ అవుతుంది, అరిగించడం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి అందుకు వాడకూడదు. బయోలాజికల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మూలానికి అందులో ఏం వచ్చాయో. కానీ ఈ పాయింట్ జరుగుతుంది. హై టెంపరేచర్ స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది, మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ మారిపోయి సెకండ్ స్టేజ్ స్ట్రక్చర్ అది అరిగించడం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి అది ఆ నూనె అందుకు వాడకూడదు రెండోసారి మూడోసారి. అలాగనమాట. కారణం ఏంటంటే అది నేను అనుకున్న ఉత్తి విస్కాసిటీ మారడం వల్ల ఏమీ అయిపోదు కదా అని నేను అనుకున్నాను. కానీ ఆ పాయింట్ కాదు. ఇది హై టెంపరేచర్కి అయినప్పుడు ఈ బాండేజ్ మాలిక్యులర్ బాండేజ్ స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది. ఆ సెకండ్ స్ట్రక్చర్ అది అరిగించడం కష్టం కాబట్టి అది వాడకూడదు. అది మెయిన్ కారణం అన్నమాట. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గౌరీ న్యామాని. हाउ टू स्पेंड मनी इवनली, पैसा सही तरीके से कैसा खर्च करें। उस चैनल में मैंने ये बताया था कि जो तेल हम यूज़ करते हैं भूनने के लिए उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्योंकि विस्कोसिटी सिर्फ कम होता है और उसमें कोई बायोलॉजिकल इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए हम बेधड़क यूज़ कर सकते हैं। मैंने जोरदार दावा करके कहा था कि इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे शाडू के लड़के ने बताया, डॉक्टर ओ सुंदरराव, वाराणसी यूनिवर्सिटी से उसने पीएचडी किया केमिस्ट्री में, उसने बताया कि जब हाई टेम्परेचर यानी भूनने के लिए तेल में कुछ पूरी या जो भी भूनने के लिए जो गर्मी पे ले जाते हैं, उस हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, उसके बाद में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब बदल जाता है तो सेकंड स्टेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो पचने में मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते उसका इस्तेमाल करना सही नहीं है। ये इसलिए मेरे को ये करेक्शन करने की ज़रूरत है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने जो जोरदार दावा के साथ क्या कहा था वो गलत है, ये सही है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जैसे इसने बताया ये मॉलिक्यूलर बॉन्डेज स्ट्रक्चर बदल जाता है जो पचने में मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उस बारे में ये करेक्शन की ज़रूरत है जो मैं भी कर रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल गौरी न्यामानी। इस वीडियो में मैं अभी जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इराक ईरान बार जब युद्ध हो रहा था उस वक्त मैं ईरान हिंद जहाज MV अदीब पे काम किया था, थर्ड इंजीनियर के रैंक में। और एक वॉच किया था मैंने बंदराबाद से बंदर खोमनी तक। तो हम जो उस वक्त स्कड मिसाइल मारता था सद्दाम हुसैन, और वो हीट गाइडेड मिसाइल थी, इसलिए पायलट हमको सबको बुलाया और पायलट ने कहा कि आप लोग सब वहाँ क्या होता था, हर पायलट बोलता था आप आगे जाओ, आप आगे जाओ, आप पहले आप। तो ये हमारे पायलट ने कहा हम उल्टा करेंगे, हम सबसे पहले भागेंगे, आप फुल स्पीड दे दो इंजन, और कोई इंजन में मत रहो, आप सब बाहर आ जाओ, लाइफ जैकेट पहन के सामने खड़े हो जाओ, एकदम फोकसर के पास एकदम सामने खड़े हो जाओ, और कोई जल्दी से आगे पानी में मत कूदना। ये मिसाइल मारेगा तो पनेल को मारेगा, हीट गाइडेड मिसाइल है, तो जहाँ डूबेगा भी तो आराम से डूबेगा, तो उसमें कोई ये भी नहीं है। लाइफ जैकेट से पहन के एकदम सामने खड़े हो जा। जैसे पायलट ने कहा था हमने वही किया, सामने जाके खड़े हो गए। और 8 नंबर बॉय के बाद 17 नंबर बॉय तक जो वॉयस था वो खतरनाक था, उसी बीच में उस दरम्यान में मिसाइल लगता था उसको। तो इत्तेफाक से उस वक्त नॉन एलियन कंट्रीज़ की मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, तो उन्होंने कोई अटैक नहीं किया सद्दाम हुसैन ने, तो हम सही सलामत बाहर आ गए। और उस बाकी लोग जहाज़ थे, खासकर इंडियन नेवी के तनवर जी एक थे,
वो बोलते थे आप लोग उतर गए, लेकिन हम हर वाइज में ये करते थे कि भगवान इस बार बेड़ा पार करा दो, ऐसा कर करके उन्होंने और नौ वाइज और भी किया था तनवर ने। और 10वें वाइज के बाद उसमें उसने मुझको चिट्ठी लिखा, अभी मिसाइल लग गया, हम उतर गए। और आपने जो जहाज़ पे कुछ पूजा वूजा किया था उसके से कुछ फूल मिल गया, हम लोग जिंदा बच गए, ऐसा उन्होंने हमको खबर भेजा, एक चिट्ठी लिखा था। तो अभी ये मेरा कहने का इस वीडियो का ये है कि ये जो वार चल रहा है, ये बहुत बड़ा महंगे चीज़ को एक छोटा सा ड्रोन मार देता है, और जितना बड़ा चीज़ भेजेगा उतना उसको उतना छोटा चीज़ उसको मार देता है। और यही प्रिंसिपल से हमने कराची हार्बर में जो पीटिया बोट से तहलका मचा के तभी हराया था 70 वार में, पिछले वार में ही पाकिस्तान के साथ। वो क्या बड़ा बड़ा शिप के साथ एक छोटा बोट ले जाकर बोट अंदर चले जाता है और जितना ध्वंस करना कर सकता था। वैसे छोटे चीज़ से जो डैमेज होता है, अभी अभी ये जो ट्रम्प जी की बात चल रही कि ग्राउंड फोर्स भेजेंगे, और इन्होंने ड्रोन से ईरान के अंदर अंदर उनके सुरंगों के अंदर भेज के काफ़ी लोगों को मार दिया। ऐसे अभी ये उन लोग ये उल्टा कर सकते हैं कि ये जो ग्राउंड फोर्स भेजेंगे उसके ऊपर ये अगर ड्रोन से पेस्टिसाइड मार देंगे तो सारे के सारे बंदूक हाथ में लेने के आगे मार जाएंगे। इसमें सिर्फ इक्विपमेंट की बात नहीं है, कौन सा आइडिया कब निकलेगा किसी को पता नहीं। ये अगर ऐसा करें तो ड्रोन से पूरा पूरा वहाँ का वातावरण पूरा हवा में भर दें पेस्टिसाइड से, सांस लेने को कुछ बचेगा नहीं, तो लोग मर जाएंगे और बंदूक हाथ में ही रह जाएगा, हाथ में लेने की बात तो नौबत नहीं आएगी। तो इसलिए वो खतरा है अगर ग्राउंड फोर्स भेजते हैं। जरूरी है बाकी सब गारंटी हो जाएगी वहाँ से कोई नहीं मारेगा तब भेज सकते हैं। तो कौन सा अभी रुख कैसा लेगा ये किसी को पता नहीं। हर रोज़ हर चीज़ हर क्षण बदल रहा है। तो हमको ऐसा आइडिया आया था कि क्यों एक बार मेरे को इसी हालत में मैं फंस गया था। जाफराबाद में क्लिंकर लोडिंग हो रहा था, सीमेंट लोडिंग हो रहा था, नर्मदा सीमेंट, और चौगले के जहाज जहाज पे मैं चीफ इंजीनियर था। तो लोडिंग के वक्त क्या हो गया, एक बार चौगले के जहाज पे और एक बार अपना सिनेमा एक्टर विलन मदन पुरी जी का लड़का कैप्टन पुरी के जहाज नंदमोहिल पे एक दो बार में सेलिंग करता था जहाज पे, वहाँ जाफराबाद में लोडिंग होता था और सूरत में अनलोडिंग होता था। तो वहाँ एक बार क्या हो गया था, ये सीमेंट लोडिंग के वक्त हवा का रुख एकोमोडेशन की तरफ बदल गया, और इतना ज़ोरदार बदला कि कुछ सब लोग उतर के भाग गए, और मेरे को उतर के भागने में मैं नहीं जा सका, और पूरा वातावरण सीमेंट के पाउडर से भर गया था। और जो सांस लो तो सीमेंट का पाउडर अंदर जा रहा था नाक के अंदर। तो मैंने क्या किया, टर्बालिन था वहाँ, टर्बालिन को 6 इंच दूर में रख के जितना हो सके था वही हवा से सांस लेके करीब 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक हवा का रुख वैसे ही था, कोई नहीं आया जहाज पे, बाकी लोग भाग गए थे। तो बड़ी मुश्किल से मैं अपना जो सांस लेता था वही हवा को फिर दोबारा लेके कैसे भी अपने आप को जिंदा रखा। और वो मेरे को याद आया, ये अगर ड्रोन से पेस्टिसाइड मारेंगे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, ग्राउंड फोर्स भेजता है। ये हर क्षण ये कैसे कैसे ये रुख बदलेगा, किस तरीके में कौन सा रुख में बदलाव आएगा कोई बता नहीं सकता है। तो ये बात है, इसी बात को मैं भी यही बात मैं बताना चाहता था। वेलकम टू माय चैनल गौरी नामानी इंग्लिश। In this video, I wish to point out, I had said when war was going on between Iraq and Iran on the Iranian ship, Irano-Hind Shipping Company, a subsidiary of Shipping Corporation of India. I was the third engineer, and we had boarded the vessel at Bandar Abbas, and we were sailing to Bandar Khomeini, and the pilot called all of us and he said, normally we ask other pilots to go, we ask other pilots to go first. I have taken a different decision. We will go first. You give full speed engine and set the engine on auto, and all of you come out, don't stay in the engine room, and all of you wear life jackets and go stand and forward and be there. Even if the missile hits the funnel, because he'll get a missile, Scud missile, and it will hit them, and the ship will takes time to sink. So don't be in a hurry to jump first, and just stay forward and things watch the things, and only when it is essential you have enter the water and slowly enter the water. Till then you don't jump first, don't be panicky. And that was the instruction of the pilot. He said okay, and I stood forward,
I was not worried about the missile. I was worried about the very cold water there. The temperature and very cold water. I was not worried about missile. That was the fearing point for me. And while going forward, we saw Rishi Vishwamit, a ship of shipping, the sister ship of Rishi Valmiki, Kalvari Shipping Corporation ships. Mast was being seen. It got sunk by himself by, hit by missile. So that was the thing. And that from once you cross number 8 boy to number 17, once you cross number 17 boy, you are safe and you will reach Bandar Khomeni. The previous name of the Bandar Khomeni port was Bandar Shahpur. When the regime changed and Ayatollah Khomeini took over, the name of the port changed to Bandar Khomeini. So that was that. And similarly, this modern day taxi in war, you may have very big missiles and ICBMs, but the very small thing may change your calculations. And these very big ships like aircraft, they are very big target. Very big targets are easy to hit. And we had done havoc in Karachi Harbour with Petia boats, as the Russian players taught us. You take the boat along with the ship and let loose the boat inside the harbour. That plays havoc. So this was not expected by Pakistan Navy, and Indian Navy did a very good thing by the Patia boat. Similarly, now drones. Now they are saying that they have sent inside the tunnels of Iran's tunnels and killed many people with drones attacking, going very well inside. But the same thing, if the same ground army, if they attack with drones with full of pesticides, will be nothing to breathe with. The whole atmosphere will be laden with uh, pesticide. That's what they might do, because normally drones are being very well used for pesticide operations in agriculture. In war, they'll be used for spreading poison instead of the good old napalm bombs, etc. The previous old techniques. Now simply spray the pesticide that will do the job of killing the enemies. So a similar thing happened while loading at Jafrabad. I used to sail a seafarer on Chowgila ships, as well as our Hindi cinema villain Madan Puri's son, Captain Puri's vessel Nand Mayur. So once the loading was being done at fast rate, but suddenly the wind took such a turn that it turned towards accommodation, and all the rest of the people, the whole ship was getting filled with cement powder, and they all ran away, jumped from the ship, and they all ran away. But I could not do that because the distance from the jetty was a little more. I couldn't jump off and run away. So all of them ran away, and I was the only person left on the ship. What I could do was, I put the tarpaulin at a distance of 6 inches from my nose, and whatever air I was breathing in, I was again breathing out also same air for till the duration. It's the wind direction remained same. Because if I take out the tarpaulin, my nose will be, the breath will be full of cement dust, and the chances of survival will be very low. So what I did was, I put at a distance of 6 inches. I was breathing the same air, and after 1.5 hours or so, 2 hours, all of them came back once the wind direction changed and subsided. So similar thing, if the drones attack with pesticides, a very large army with the brain guns, 10 gun, all guns will go to the dust, not to the dogs. So that is what will happen. So they should, when they claim that they are successful in hitting the enemies with the drones inside the tunnels, the same thing they can do on the ashore or outside when the land army is going down, because of land army being too much in Vietnam War. I recall very well. There were more camera shooting with long lenses, very long lenses, camera shooting, more journalists than infantry army. That was the main reason they lost the Vietnam War. And Kissinger and Nixon, they were calculating ultimately the economics. They were losing more, and Viet Cong with the guerrilla warfare, with the very cheap tricks, they were winning small battles, and then they decided to call it a day, and they went for truce and permanently friendship.
and greater friendship with China than with other countries. So that was that happened in those days. So you may have large kinds of different kinds of armory, but which kind, new kind will upset your calculations, we don't know. So that is one aspect. We have to be careful in fighting with new tactics that are being taken place.